Good evening, ladies and gentlemen. I think I would like to speak on the One Health initiative, concept and applications. Uh, it is a kind of new word which has come up globally, and everybody is at the moment is worrying about what what is this One Health? ये क्या है? क्या होना चाहिए और ये किस तरीके का है? इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा. And I also congratulate all veterinarians for on the occasion of World Veterinary Day, which is going to be celebrated on 29th of April this year. And it is just to show, it's very important to show the society or to the world that what we are doing, how important we are and how significant our work is. So जिस तरीके से हम लोग शुरू करते हैं, सभी को सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्. सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें. और इस कंसेप्ट के साथ मैं आगे चलता हूं और मैं बात करता हूं वन हेल्थ इनिशिएटिव की. ये क्या है, क्या कंसेप्ट हैं इसके और क्या एप्लीकेशंस हैं. वन हेल्थ concept recognizes that the health of people is connected to the health of animals and the environment. ये बहुत शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि the man lives in the proximity of the animals and the environment. Even now, where you are very near to the nature also somewhere, and with the animals and the environment. So we have to take care of the health of the animals first, importantly, and then second, the environment. It's a new phrase, One Health, but the concept is way back to the ancient times. बहुत पहले से ही ये आया है और आपस में जो बात उन्होंने की है, particularly the Hippocrates ने in his text on airs, waters and places. तो environmental factor की बात करते हैं कि जिसका impact human health में क्या होता है, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी. द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स. इट इज नाउ इमर्जिंग दैट whosoever is working locally, nationally and then globally. What is the aim of this? To attain optimal health for people, environment and the animals. Actually, what is One Health approach? It is to design and implement the programs, policies, legislations and research in which multiple sectors communicate and work together to achieve better public health outcomes. Many places the governments are coming up at one table and then they are designing the policies, legislations so that we can optimally improve the health of people. Simultaneously, we can improve the health of animals and the environment. The main areas here are food safety is very, very important nowadays. Food safety, food quality, control of zoonosis, and combating antibiotic resistance. Antimicrobial resistance is one of the very important component of this. We know how to achieve this One Health and how people are working globally to achieve this by coordinating, communicating, and collaborating. Then why do we need it? इसकी ज़रूरत क्या है हम लोगों को? अगर हम वन हेल्थ इनिशिएटिव की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि spread of diseases from animals to human by vaccinating them. We know that you might have heard about the word zoonosis. The emerging zoonosis, re-emerging zoonosis are worrying whole the humanity, and we have contacted, we have faced very everybody has been affected by the COVID-19 and many other viral diseases which are still becoming more important to the human beings globally. More importantly, the rabies, we can eliminate the rabies by vaccinating the animals or the pets. Secondly, to collect the information of infectious diseases to prevent the pandemics. Pandemic means the whole over the world or all over the globe.
These are the influenza viruses, and to prevent transfer of drug-resistant microbes that can be transmitted by direct contact or through contaminated food between animals and humans. We know that nowadays a large number of the antibiotics or other medicines, they are used for as a growth promoter with high limit which is beyond the tolerant limit. So that also causes the drug resistance in the human being. So it is with the contaminated food or through the contact. So that also affect the whole humanity, whole human beings. This approach is basically based on the data, epidemiological data and laboratory information, and it should be shared across the globals. The idea is that let us share the data, whatever we have about a particular disease, which is becoming a kind of zoonosis. So international bodies, they come together and they are on at a platform. Particularly the WHO is working very closely with FAO and OIE. It is for the promotion of the food safety hazards. Everybody should know about the food safety hazards, spreading awareness about zoonosis and other public health threats, particularly the guiding the people how to reduce the risk of these diseases. Because when we are in touch with the animals, or if you do not know, so many diseases which are there, they can be affecting the man or human beings, so that we should be aware of those diseases. Similarly, we know what is the economic impact. I think the worldwide information is there, and it already shows that in India also, and many loss of many lives, as well as the loss of the rupees in terms of, or dollar in terms of the treatment, or in terms of the preventive measures taken for the control of that diseases. One health history we know about Hippocrates, as I told you earlier, that they promoted the concept that public health depended on a clean environment. What is the scope of One Health according to FAO, Food Agriculture Organization? They say that there are transboundary animal diseases, a very important when we take the animals from one place to the other, and zoonosis, which are diseases transmitted between the human and the man and the animals. So what are those diseases which are important? Emerging and re-emerging infectious diseases, already they are there, but they re-emerge again. Environmental health, including wildlife health, it's very important. This is also one of the component when we talk about the environmental factors. Livelihoods, food security and safety, multiple disciplinary approach. This is important. Then all, I will discuss it later, all should come at one table and understand the psyche, understand the epidemiology of the disease, and then coin the safety measures or preventive measures. Ability to deal with unknown, sometimes we do not know, and proactive rather than responsive. So we don't have to respond, but be proactive in terms of collaborating the information about the disease. Similarly, should veterinarians be more aware of zoonotic diseases in pets? क्या हम लोगों को पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए. Both veterinarians and physicians of the owner should be aware of the zoonotic diseases. So veterinarians, when they see pet owners in the same office, because we are in close association with the animal, so public health education and zoonosis can occur in a real time scenario. हम एक यूनिट हैं, जो ऐसी यूनिट हैं जो सबसे पहले एनिमल के कांटेक्ट में आता है, तो वो ही एक्सप्लेन कर सकता है, वो अकरेंस ऑफ जूनोटिक डिसीजेस के बारे में बता सकता है एक कम्युनिटी में. तो his information is very important. Similarly, the formal reporting system that the veterinarians communicate potential health risk to the pet owner. Pet owner को भी आप बताइए क्या potential health risk हैं, and also to the owner's physician. Then we say that physicians should ask about the pets in the home as a part of patient health history. Patient की अगर आप health history ले रहे हैं तो pet के बारे में भी जानना जरूरी है. There are so many positive outcomes to have a pet in a home. We know
that why they are important, because today's world nuclear families are there and pet can provide strong emotional support. मैं तो ये कहता हूँ कि घर में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो मेंबर आपका पेट है. पेट कैन प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्शन और फंक्शन एज सर्विस एनिमल्स. इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो मोर एक्सरसाइज है, जो कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो भी हो जाती है जब आप उसको बाहर ले जाते हैं. सो इट गिव्स यू ए वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज. एंड ये भी कहा गया है कि स्टडीज़ और रिसर्च ने ये बताया कि अगर बच्चा पेट के साथ खेलता है तो उसकी जो सोशल स्किल्स हैं वो बहुत डेवलप हो जाती हैं. तो इस तरीके से मोटर एक्टिविटीज़ और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द पर्सनैलिटी, तो वो बच्चा अच्छी तरीके से एक तो लविंग बन जाता है और कैन टेक बेटर केयर ऑफ देमसेल्फ और ऑल्सो एनिमल लवर बनता है. तो इस तरीके से ये अप्रोचेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वेटनेरियंस, लोकल मेडिकल एंड वेटनरी एसोसिएशंस. क्या करना चाहिए हमको? व्हाट ओनर्स टू डू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स and their pets from zoonotic diseases. Vaccinate the pet is very very important, especially against rabies. Rabies के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम भी है कि ये क्या प्रॉब्लम है इसमें. रेबीज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फैटल है. 100% फैटल इसको बताया गया है. CNS की प्रॉब्लम है इसमें और रेबीज अकाउंट्स टू अबाउट 55,000 डेथ एनुअली. एक साल में इतनी 55,000 के आसपास की डेथ होती हैं, वो भी अभी अनरिकॉर्डेड बहुत होती हैं. तो डॉग बाइट से हैं उसमें से 90% जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये मैमल्स की बीमारी है, बड़े वार्म ब्लडेड मैमल्स की प्रॉब्लम है. एंड द डॉग 60% स्ट्रे डॉग्स के थ्रू होता है और 40% पेट्स के थ्रू. सो पेट ओनर को ये सजेस्टिव है कि भाई इसके लिए बड़ा केयरफुल रहें और उसको वैक्सीनेट करें. ऑल ओवर इंडिया इसकी प्रेजेंस है, एक्सेप्ट अगर कहें लक्षद्वीप में और अंडमान में, निकोबार में. उसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड 3-8 वीक्स का है. हाइड्रोफोबिया मेन सिम्टम होता है इसका और इसको जो है पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन भी होता है. तो इसी तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एनिमल्स के बाइट करने से होती है तो तुरंत उसको वुंड को सोप से धो देना चाहिए. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद में जो भी आपने आगे उसको ट्रीटमेंट करना है वो करें, और लेकिन पहले ये जो फर्स्ट एड है वो ये कर दें. कॉन्टैक्ट दी वेटनेरियंस. ये भी आप पेट ओनर को बताएं कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं करें और वेटनेरियंस को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. इस तरीके से व्हाट कैन पेट ओनर्स डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर पेट्स फ्रॉम जूनोटिक. क्या करना चाहिए? प्रॉपर सैनिटेशन इज द सैनिटेशन ऑफ हाईएस्ट ओवर. ओनर को भी और वेटनेरियंस को भी रखना चाहिए. क्यों? कि इससे वॉशिंग हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग द एनिमल्स, रिमूविंग फीसिस फ्रॉम कैट बॉक्सेस. अगर कोई कैट रख रहा है तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें. क्यों? कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस स्प्रेड करता है. इसके बारे में बताऊंगा बाद में आपको. तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज ए सीरियस डिसीज ऑफ फीमेल्स पर्टिकुलरली. अगर फीमेल्स में देखें तो टॉक्सोप्लाज्मा क्या क्या कर सकता है और क्या करता है, ये प्रेग्नेंट एनिमल्स, प्रेग्नेंट मेल फीमेल्स को ये मिसकैरिएज कर सकता है इसमें. और इसके अलावा ये मेंटल रिटार्डेशन जिसे कहते हैं, हाइड्रोसिपेलस जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रॉब्लम हो जाती है. बच्चा अगर पैदा हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन होता है उसमें और इट इज़ ए लायबिलिटी फॉर होल लाइफ. सो सर्टेन थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी एनिमल्स टू द ह्यूमन बीइंग. सो इसी तरीके से नॉट शेयरिंग फूड यूटेंसिल, उसके बड़े आप साफ सुथरे रखिए. क्लिपिंग कैट क्लॉज फ्रीक्वेंटली टू लेसन द रिस्क ऑफ स्क्रैचेस. एंड इसी तरीके से मिनिमाइज द इंटरेक्शन ऑफ योर डॉग विद द वाइल्ड लाइफ. बाहर आप खुला मत छोड़िए कहीं पे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की प्रॉब्लम है, वहाँ मत रखिए. स्ट्रे डॉग से उसको बचाइए क्योंकि ये नॉट ओनली ये इन्फेक्शन देगा, इसके अलावा और भी दूसरे तरह के इन्फेक्शन आपके डॉग को मिल जाएंगे. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
हेल्दी इंडिविजुअल जो हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि आदमी की हेल्थ ठीक होनी चाहिए, तो वी डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए लार्जर कम्युनिटी। तो उसमें सभी होते हैं, उसमें अर्बनाइजेशन है, चाहे वो माइग्रेशन है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है, ग्लोबल ट्रेड है, उसके अलावा आइसोलेटेड आउटब्रेक्स, पेंडेमिक पोटेंशियल है। तो हम लोगों को इन आइसोलेशन में तो हम है ही रह ही नहीं सकते, हमें उसी में रह करके ही अपनी हेल्थ की केयर करनी है। ये कुछ डिसीजेज हैं, सार्स जिन्होंने काफ़ी वर्ल्ड में धमाल मचाया अपने टाइम में, ईबोला, जीका वायरस, वेस्ट नाइल, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। एंड ये एनवायरनमेंट, पीपल एंड एनिमल, इन तीनों के ही रोल है इसमें इनका। 60% ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन इन्फेक्शंस के बारे में जो कहा गया है वो आपके जूनोटिक हैं, और उसमें से भी 75% एनिमल ओरिजिन के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जितने भी जूनोसिस हैं वो 75% जो है एनिमल ओरिजिन के। न्यू ह्यूमन डिसीजेज अपीयर एवरी ईयर, देयर आर ऑफ द एनिमल ओरिजिन, 5 के करीब हर साल जो है 5 के करीब नई नई डिसीज आ जाती हैं जो एनिमल ओरिजिन की हैं। 80% ऑफ एजेंट्स विद पोटेंशियल बायो टेररिस्ट, दीज आर ऑफ जूनोटिक पैथोजन। तो ये बायो टेररिज्म में भी यूज हो रहा है, एंड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन में क्या इम्पैक्ट है इसका? अकॉर्डिंग टू WHO इन 2005 अलोन 1.8 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम फूड बॉर्न डायरियल डिसीजेज लाइक ई कोलाई और साल्मोनेलोसिस। इससे पहले देयर आर 1 मिलियन वर्टिब्रेट वायरसेस ऑफ विच 2000 आर नोन। अभी 2000 का ही पता लगा है, and this represent a large potential for zoonotic emergence. Even less is known about. More than, as I have told, 55,000 people die of rabies each year, and estimated 2 to 8% of 1.6 million annual human deaths from tuberculosis of the bovine origin. One health in action क्या होना चाहिए इसमें? ह्यूमन हेल्थ, डोमेस्टिक हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। ये कोलैबोरेशन है इसमें मेन। वी हैव टू कोलैबोरेट विद द इवन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो, कि किससे क्या डिसीजेज जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं। कोऑर्डिनेट करें एंड डेवलप यूनिफॉर्म मैसेजिंग टू द पब्लिक। अगर हम ये कहें कि एन इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू व्हाट नीड्स टू बी डन, ये नहीं कहें, यही कहें, इसके अलावा ये नहीं कहें व्हाट कैन आई डू, अपोज टू द क्लासिकल अप्रोच बेस्ड ऑन व्हाट कैन आई डू। इट मीन्स वी हैव टू गो फॉर कोलैबोरेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग। ये रुडोल्फ विर्चो हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी हैं। जूनोसिस की टर्म इन्होंने क्वाइन की थी, इन्होंने ही बताया था। इसके बाद जेम्स हर्लान स्टील, फादर ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ हैं। स्वाबे हैं, वन मेडिसिन का स्लोगन दिया था इन्होंने। ये 2004 में मैनहट्टन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ ये स्लोगन दिया। 2007 में वन हेल्थ रेजोल्यूशन पास हुआ अमेरिका में। इसके साथ साथ 2008 में ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस WHO, OIE एंड FAO, WHO ह्यूमन हेल्थ देखता है, OIE एनिमल हेल्थ देखती है, एंड FAO जो है ये एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट देखता है। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया विद यूनिसेफ, यूनसिक एंड द वर्ल्ड बैंक टू डेवलप जॉइंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब एक ही टेबल पे आके और डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से जो है ह्यूमन वरीज, ह्यूमन सफरिंग को कम किया जा सके। USAID launched the Emerging Pandemic Threats Program and One Health Office was established at CDC, Center for Disease Control, USA में। वहाँ 2009 में ये हुआ। इस तरीके से 10 में ट्रिपार्टाइट कंसेप्ट डेवलप हुआ, ये पब्लिश भी हुआ, वन हेल्थ अप्रोच। 2011 में वन हेल्थ कमीशन बना। 12 में जो है फर्स्ट वन हेल्थ समिट हुई। इसके बाद ये ब्राज़ील, थाईलैंड एंड कतार में ये शुरुआत हो गई। कहने का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि ग्लोबली लोगों को परेशान कर रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ AMR by 2050 would be wide ranging. 20 million people they are projected to be affecting by the AMR. As I have discussed you, AMR बड़ा लॉस करता है, और उससे जब एक बार ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, so we have to be careful in using the antibiotics. Where there is necessity, there we have to use these antibiotics and other things which are causing the resistance, because sometimes there are so many factors for antimicrobial resistance.
and one of them is the indiscriminate use of the antibiotics. बायोटेररिज्म में भी का यूज हुआ है, पैरासाइट्स का भी, और इसमें एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, निपा एंड बोचुलिज्म टॉक्सिन। ये वही तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, 4 जो कि इस समय काम कर रहे हैं एक साथ। इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कर रही हैं? वही ये 3 एजेंसीज हैं, इसके अलावा और भी इसमें जुड़ गई हैं, उनके अपने कंट्रोल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इनिशिएटिव इन इंडिया में क्या लिए गए? इंडिया में जूनोसिस के बारे में काफ़ी बात की गई, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश में। तो FAO जो है इस फील्ड एपिडेमियोलॉजी की ट्रेनिंग वेटनरियंस को दे रहा है। फील्ड एपिडेमियोलॉजी मीन्स कि यू हैव टू नो अबाउट द काइंड ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डिसीज। इसी तरीके से जो पब्लिक हेल्थ का एजेंसी है इंडिया में, and PHFI leads initiative and advocacy for an integrated approach, integrated disease surveillance program इन्होंने बताया। इसमें वेटनेरियंस भी अब आ रहे हैं। कोई भी पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो आने वाले टाइम में जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें पोस्ट ऑफ ए वेटनरी कंसल्टेंट भी जरूरी हो जाती है स्टेट सर्वेलेंस के लिए, क्योंकि बिना वेटनेरियंस के ये वन हेल्थ प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दिस इज अनदर a good opportunity for the veterinarians to show their work in terms of the epidemiology of the diseases and the kind of factors which transmit the disease. Prevention and control of zoonosis current effort ये काफ़ी है। RCZI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड मैप बनाती है, रोड मैप फॉर कम्बैटिंग जूनोसिस इन इंडिया। इसके लिए भी ये काफ़ी प्रयासरत है। एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन इन्होंने बना लिया है इंडिया में ऑलरेडी, पर ये एफर्ट अभी बहुत कम है, अभी परकुलेट नहीं हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। और एक इसकी बॉडी भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक बनेगी, जिसमें कि जूनोसिस जो डिसीजेज हैं, जूनोटिक डिसीजेज, उनके बारे में वेटनेरियंस, मेडिकल पीपल एंड द एनवायरमेंटलिस्ट, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर टू अंडरस्टैंड द प्रिवेलेंस एंड द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिसीजेज, एंड उससे कैसे हम ऑप्टिमल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नो, एंड आई हैव कवर्ड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टॉक्सोप्लाज्मा। यू नो, मैंने कहा था टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में, तो उसके बारे में भी वो एनिमल से है, कैट से है, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। सो दीज 2-3 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन, बट दीज आर ऑल फॉर द मेकिंग पीपल हेल्दी, and then healthy environment, and then healthy animals. If all the 3 are healthy, then we can achieve the goal of the optimal health for human being. And this is the total concept of the One Health. Friends, I am thankful to Petofy for giving me this opportunity to talk with the veterinarians and to give or to deliver this important One Health concept to the people and to the veterinarians. I am thankful to them, and with these I say thank you very much for all those who are listening to this a kind of a glimpses of the One Health concept and the applications. Thank you very much. Namaskar.